Good morning, everyone. I hope you guys can hear me and see me. Great. Thank you guys for confirming. So, welcome everyone for the morning session. My name is Avinash and I'll be your host for the today's session. So, yes, हम काफी बातें करेंगे आज मार्केट के बारे में. Once our expert join us, right? And for today's morning session, we will have with us Nikun sir today, right? And वो आपको बताएंगे since we have our Nifty expiry as well today. तो लेट्स सी कि मार्केट ने अभी से कुछ एक हमें मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया, राइट? क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों से मार्केट में थोड़े से फॉलो बाइंग देखने मिले थे हमें, राइट? थोड़ा लोअर हाइज बना रहा था, कोशिश किया था 2 दिन में, बट आज देखा जाए तो मार्केट में एक सेल ऑफ देखने मिला, राइट? तो मार्केट का ओपन इज क्वाइट फ्लैटिश टू नेगेटिव ओनली. मार्केट ओपन ही नेगेटिव पॉइंट हुआ है. निफ्टी की अगर बात करें इट्स लाइक फॉर 12 to 14 पॉइंट्स डाउन साइड. बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 22 पॉइंट्स डाउन साइड पे, राइट? तो ऑल इन ऑल एक मार्केट एक फ्लैटिश टू नेगेटिव ही है. सेंसेक्स की अगर बात करें, सेंसेक्स थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम दिया है, राइट? सेंसेक्स नियरली 0.5% अपसाइड, राइट? एंड अगर निफ्टी मिड कैप की भी बात करें तो एक फ्लैटिश टू पॉजिटिव ओपन हुआ. तो जैसे कि हम बात करते हैं मिड कैप स्टॉक्स में और स्मॉल कैप में थोड़ा सा हमें तेजी देखने मिला है काफी सारे स्टॉक्स में. तो उसी के बारे में अगर बात करने जाए हम, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, आप हम एक स्टॉक सजेस्ट करते हैं फॉर 2-3 days टाइम फ्रेम व्हिच इज एनटीपीसी. you can definitely focus on NTPC for the technical picks that have been suggested to us. So for target, for the potential upside of 5% from here, तो target रहेगा NTPC का 343 का. 346 will be the target for NTPC. The technical point of view, you should definitely keep your eye on, right? So I can see Nikun sir have already joined us. Nikun sir, let me know if I'm audible to you. Yes, am I audible? Yes, absolutely, sir. You are audible. Okay. So I'm good to go? Yes, over to you, sir. You can start. Okay. So good morning, everyone. Good morning, Avinash. Welcome to the first, the weekly expiry day of the Nifty. And start करते हैं निफ्टी के लेवल्स के साथ ही. तो निफ्टी आज थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है and it filled the gap down area of the 28th February, last Friday का जो gap down area था, आज उसने fill किया है थोड़ा बहुत. and ऊपर में 22,500 के आसपास रेजिस्टेंस लेके ऊपर से हमने थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखा है, wherein it has almost corrected 180 points from the higher zone. So as of now, I think 22,500 एक immediate hurdle रहेगा. We have been mentioning this. 22,300, 22,500 एक immediate hurdle point है for Nifty. नीचे में 22,000 जो राउंड फिगर है, that is the immediate support, and उसके नीचे 21,800. So as of now, आज के लिए अगर लेवल पर से देखें तो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो नीचे में 22,222 इंट्राडे के लिए फॉर प्योरली आज एक्सपायरी बेसिस के लिए 22,222 इज द सपोर्ट, एंड ऊपर में 22,400 and 500 आदि हर्डल पॉइंट्स. तो ये 150-180 पॉइंट्स का रेंज है फॉर द वीकली एक्सपायरी आज जो एक्सपायरी है निफ्टी की. तो 22,222 आज इंट्राडे सपोर्ट है, एंड ऊपर में 22,400 and 450 इज द रेजिस्टेंस पॉइंट. तो ये रेंज रहेगा फॉर द वीकली एक्सपायरी. एंड अगर 22,222 के पास आता है, देन वी कुड सी हाउ इट बिहेव्स, एंड वहां से अगर सपोर्ट ले रहा है तो वेल एंड गुड. लास्ट 2 दिन से थोड़ी सी रिकवरी देखी है हमने, तो 21,950 से वी हैव सीन 400-500 पॉइंट्स पुल बैक, एंड दिस ओनली पुल बैक जब तक 22,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है निफ्टी में, क्योंकि जो 22,800 जो प्रीवियस सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा. तो 3-4 बार इट मेड एन अटेम्प्ट, bulls tried to defend the 22,800 zone, but it failed to do so, and eventually gap down से break किया. तो जो previous support था resistance बन जाएगा. तो 22,800 के ऊपर जब तक closing नहीं आ रही तब तक ये range bound रहेगा 21,000 and 22,807 points. but आज expiry पर से it would be important 22,222 पे आता है तो अगर क्या करता है. but as of now it is ऊपर से थोड़ी सेलिंग आई है, तो we'll see how the index behaves. but
अगर स्टॉक्स की अगर बात करें, इवन बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो बैंक निफ्टी कल भी अंडर परफॉर्म किया था, आज भी रिलेटिवली इज ट्रेडिंग फ्लैटिश बिकॉज एचडीएफसी बैंक इज नॉट परफॉर्मिंग. कल भी एचडीएफसी बैंक नीचे था, बट द अदर थ्री प्राइवेट मेजर्स, Kotak, Axis, and ICICI were trying to support the bulls, but HDFC being major heavyweight थोड़ा सा soft था, which is why it did not participate in the rally wherein Nifty was up 250 points and Bank Nifty was also up by 200 points. So थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, बट तीन दिन से हायर हाइस कंटिन्यू है. बट ऊपर में 48,888 जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वहाँ पे 49,000 is the immediate resistance point for Bank Nifty. नीचे में 48,350 and 48,000 are the support. So this 800 point 900 point worth of range है Bank Nifty में, but till the time it is holding between this, I mean 49,000 is the immediate resistance, 48,800 and 49,000. नीचे में 48,350 and 48,000 are the supports. So these are the levels एक range में है, but we have seen some pullback. तो थोड़ा सा it would be important to see how it reacts near 40,300 zones. So I think index के बारे में बात हो गई है. Support resistance we mentioned. Nifty में 22,222 is the आज के लिए support, and ऊपर में 22,400 450 are the immediate resistance point. So intraday trade अगर हम देखें तो I think globally a lot of things have happened. Crude has corrected to 68 per dollar barrel, so which is positive for the crude derivatives जैसे कि paint stock है, tire stock है, oil marketing companies है, HPCL, BPCL, IOC. So IOC is one stock which we can do an intraday trade. We have also flashes terminal. So IOC आप intraday के लिए trade कर सकते हैं. Then you can buy at CNP that is 125, keep a stock of 122.5 and look for target towards 130 के आसपास. So intraday trade एक IOC है because crude has fallen to almost the 4 month low and below $70 per barrel to 68 के आसपास है, which is positive for the oil marketing companies, and IOC is one of them. So you can do a good intraday trade in IOC, keeping a support of 122.5 to 130 on the higher side. And one more sector which is looking positive is the metal stocks. So metal mainly जो dollar index है, it has corrected to below 104. तो जब dollar index cool off होता है, it is positive for the metal stocks, which is why we have seen sharp move yesterday also, and the fall off is seen even today. So copper is another intraday trade where we can buy at CNP that's 224, keeping a support of 218 or 217 and look for target towards 232, 234 on the higher side. So IOC is one trade, and copper is another trade. Purely intraday trade, so don't carry your position. Maximum जो अगर stock होता है या target होता है, be active on that side. So crude is major beneficiary. जो crude की है, it is major beneficiary for the oil marketing company. So IOC is one stock. This is looking good for purely intraday, and copper is another stock which is beneficial for the falling or cool off in the dollar index. So 218, 217 का support and look for 232, 234 on the high side for copper. So I hope both the trades are clear, and I think please we keep mentioning, please these are only intraday trades, so don't carry for your trades. I think we have shared index levels. थोड़ा सा flattish है, ऊपर से corrective move देखा है in Nifty, and now it is consolidating near 20,300, 320 के आसपास. So in the meantime, stocks can do much better. So in copper is one stock which can see some momentum, and even IOC, which is a bit of low beta, but it can do wonders for the day. So these are the stocks you could focus purely intraday and look for some good targets towards copper 230, 230 के आसपास आता है, and then you can see 4-5 rupee, that is 2% move on copper intraday.
and IOC likewise. So I think we have shared the trades. I think NTPC one stock जो आप बात कर रहे थे अविनाश जी, तो I think NTPC is our CBI idea. So I think I'll share the levels as well. Even that is looking very good. But these it's a low beta counter, so it's a very good and safe stock. And it's given a breakout from the inverse head and shoulder pattern on the daily scale. So थोड़ा सा deeper stop है, that is 310 के आसपास stop करके ऊपर में look for target towards 340 on the higher side. But ये एक position trade है, that is 6-7 days of trade, so do your position setting accordingly. But NTPC is looking good. थोड़ा सा low beta है तो slow and steady move रहेगा, but it will can definitely see 340 levels on the higher side, providing 315 and 310 as support. Trades intraday we have shared, that is in copper and IOC. Levels Nifty and Bank Nifty we have shared. Bank Nifty is relatively flattish, and even Nifty ऊपर दोनों positive open होके थोड़ा सा corrective हुआ है, but as of now it's holding 22,300, which is very good. So we'll see अगर कुछ setup बनता है तो we'll definitely share any trade on the index. But as of now stocks specific moves are good. Yesterday also तो अच्छा स्टॉक मोमेंटम पकड़ा थे, आज भी अच्छे मोमेंटम है स्टॉक्स में, so you should focus more on that and we can go forward with the stocks. तो कोई trade setup रहेगा we definitely share the same. So I think Avinash we have shared the trades and all. And अगर कुछ queries है किसी की तो अगर कोई position की है तो you could guide them and navigate them with this tough market. So कोई query है तो we could take few queries. अगर in the meantime कोई trade रहेगा तो we'll definitely intervene and share the same. So Nikon sir, before I move ahead with taking the stock query, so जैसे कि मैंने भी personally notice किया, while I was monitoring steel stocks में हमें अच्छा खासा momentum देखने मिल रहा है, right? I was just going through Tata Steel, Jindal Steel. So the steel companies have we have observed a good sort of volumes in buying. And back to back कुछ दिनों में लास्ट के 3 दिनों में टाटा स्टील ने ऑलमोस्ट हमें अच्छा खासा अपसाइड देखने मिला, 135 से 150 15 पॉइंट्स अपसाइड तक हमें देखने मिला है, राइट? सो फॉलोड बाय जिंदाल स्टील गुजरात. सो डू वी हैव एनी अदर न्यूज़ अराउंड इन द मार्केट फॉर द स्टील कंपनीज और any sort of things जिसमें मोमेंटम देखने मिला? दो चीजें हैं, that is one is dollar index. Dollar index has a negative correlation with metals. So जब dollar index बढ़ता है तो मेटल स्टॉक्स करेक्ट होते हैं, डॉलर इंडेक्स घटता है तो मेटल स्टॉक्स बढ़ते हैं. तो डॉलर इंडेक्स 110 112 के आसपास ट्रेड कर रहा था 3 वीक पहले, नाउ इट हैज कूल्ड ऑफ टू 104, तो व्हिच इज अ पॉजिटिव फॉर मेटल. एंड वन मोर थिंग इज कि चाइना में आई थिंक देयर इज सम मीटिंग एंड दे मे अनाउंस सम स्टिमुलस, so that is तो थोड़ा सा speculative, but if they announce it's good for metals again because China is the largest producer of metals. So I think which is why metals have seen momentum. कल भी अच्छा था, आज भी if we see in copper we have recommended 225, it's at 227. तो जहाँ पे momentum है तो it should be there. That would be the better way of playing stocks intraday or positionally. So as of now momentum and price action is in the metal counters. The metal index has seen sharp run up. There's अगर Monday के session में we did initially we focused on JSW steel, so even that stock has done well. If I share the chart of JSW steel, I think yes, so I think 989.75 के आसपास था. We have seen a move towards 1013. So I think जो sector flavor में है and जो price action जहाँ पे है which is outperforming or relatively outperforming the index, वहाँ पे रहेंगे तो that would be better, which is why we always try to see who is outperforming, which stocks are outperforming. Accordingly we give trades, be it intraday or position. Cool. So adding to it more, not the same sector in the metal pack, but हमने काफी कुछ दिनों से we were focusing on defense sector as well, right? We were sharing a couple of recommendations in intraday BTS in defense counter like HL, BEL, right? तो अभी भी जब मैं देख रहा हूँ HL is quite positive, right? It's 0.5% nearly upside. तो क्या हमें इसमें बने रहना चाहिए
थोड़ा सा हमें यहाँ पे fresh entry is favorable in this defense sector considering. I think HAL Yeah. लास्ट 4 दिन में it has rallied from 3050 to आज का high is 3500. So almost 7-8% का move आया है, and this is just a pullback move. When we gave the BTST, I remember I gave it on Monday. So purely said that एक pullback move है and अपने previous resistance के पास आया, that is 3500. So I think अगर trading position किसी ने ली है तो they should book out यहाँ पे and look for a better entry point. थोड़ा सा नीचे मिलता है तो as of now, I think all these are pullback moves and don't get carried away with being too aggressive on the long side. क्योंकि I think index is not holding आज ऊपर खुल के it is negative. So I think be cautious, don't be too aggressive, and even if you buy a position, take a put option as a hedge so that अगर कोई corrective move आता है तो you are not losing big on naked long position. So this is what I would suggest. I think अगर HL किसी ने trading position है तो you should exit and look for a better entry point नीचे के levels में, be it either on all the defense stock as well. So NLG have asked the same question on HL. HL have 50 quantities at 3188 levels. Should he hold or exit? So I think अगर trading position है, you should book out. I think look for a better entry point near low levels. I think previous races के पास है, and I think the stock can see some थोड़ा सा और corrective move too. उनका buying range is already near what 3188. Yeah, so I think he's making money. So I think he should book his profits. Cool. So NLG, if you have a trading position, you can definitely go ahead and book your profits. If you are looking for a long-term view, you can continue holding it. The view on 22,450 put on Nifty. 22,050. 450. Okay, 450. So he's bought in the money put. Wait, I just checked the levels. $450. So it's 225. So I think अगर आपने put option लिया है तो I think you should hold it. अगर जब तक अभी Nifty has corrected from 22,300 to 22,250. तो अगर 22,222 ब्रेक करता है तो I think you should continue to hold. और ऊपर में you should keep a trailing stop loss spot level पे 22,300 का. अगर 22,300 के ऊपर भी आ जाता है then you should exit your आज का है तो you should exit your put option, but till the time it is holding below 20,300 आप बने रह सकते हैं. और 22,222 के आसपास आता है तो क्या रिएक्ट करता है, अगर 22,222 ब्रेक करता है then you can make big money in the put option. So what is your view on BBL? So sorry to interrupt, Nikun sir, before you take this query, so since we have our Nifty expiry today, yes. So do we have any strike on a radar, or do we have any strategy where our clients can initiate the trade? And I think strikes on radar are 22,300 and 22,250 put options. So 20,300 put एक strike हमारे radar पर है and 20,250. और जब तक 22,300 के नीचे है तो I think be on the put side, but immediate support भी है 22,222. So intraday support है, but it's it's a psychological number, it's a very crucial number. तो अगर वो break करेगा तो we could see further corrective move. But till the time it is between 22,222 and 22,300. But the strike on radar is 20,300 put and 22,250 put. So these are strikes that are on radar. guys, I hope the strikes are clear. The very frequent asked question on the stock, that is Zomato. Okay. So Zomato as of now range bound है, नीचे में 215 होल्ड कर रहा है, ऊपर में 235 240 के आसपास सप्लाईज हो गए. उसका ब्रेकआउट एक क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है ऑन द डेली स्केल. तो जब तक आई थिंक 238 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, तो अगर 238 के ऊपर निकल जाता है देन द स्टॉक कैन सी फर्दर अप मूव टुवर्ड्स 250 लेवल्स, 255 आल्सो. बट एज ऑफ नाउ रेंज बाउंड है, नीचे में 215 वेरी गुड सपोर्ट है, ऊपर में
38 to 40 immediate hurdle point है. अगर 230 के ऊपर निकल जाएगा then we could see further up move in Zomato. Trend futures sell at 5,100. Okay. Both intraday view. ओके सो ट्रेंड आज ऊपर खुल के करेक्टिव कल भी अच्छी अप मूव दिया था लेकिन ऊपर से काफी करेक्ट हुआ था. तो आज कल का लो इज इन द स्पॉट इज 49,4987. तो आई थिंक अगर इंट्राडे ट्रेड किया है तो कीप अ स्टॉप ऑफ 1.5% एंड कंटिन्यू टू होल्ड. आई थिंक द स्टॉक कैन करेक्ट फर्दर. अगर मैं उसका आर्ली चार्ट भी देखूं तो has seen some negative momentum. आज ओपन हाई सेम है इन द स्पॉट. तो जब तक 5150 इन द स्पॉट 5161 का सब ऊपर में हर्डल है. तो 5161 के स्टॉप से होल्ड कीजिए शॉर्ट पोजीशन. वी कुड सी सम करेक्टिव मूव टुवर्ड्स 4950 एज वेल. Same review on intraday on Lawrence Lab future buy at 575.75. Lawrence Lab. So I think you should hold. आज ऊपर खुला है तो आई थिंक आज डे लो के स्टॉप से होल्ड कीजिएगा इंट्राडे पोजीशन में तो एंड लुक फॉर टारगेट ऑफ 1.5% to 2% ऑन द हाई साइड. तो आज फ्यूचर्स बाय करने का इन्होंने बाय किया हुआ है ना. He's asking for your suggestion. Lawrence future buy, so bought or buy, I'm not really sure because he just wrote buy. ओके तो आई थिंक गैप अप खुला है. तो आज का जो डे लो है दैट इज 570 इन द स्पॉट लेवल्स. तो 570 569 के दैट इज 10 रुपीस. सो 2% का स्टॉप इफ यू वांट टू बाय कीप अ स्टॉप ऑफ 2% दैट इज आज का लो एंड लुक फॉर 1.5% 2% का स्विंग ऑन द हायर साइड. What is your view on Apollo Tyre? So Apollo Tyre consolidation में है नीचे. although it is in a weak downtrend only, but आज gap up खुला था and it failed to sustain at higher zones. But all the tire stocks, paint stocks and OMCs, so falling crude is positive for this sector, which is why आज ऊपर खुला था but ऊपर sustain नहीं हो पा रहा है. तो ऊपर में 410 एक resistance point है for Apollo Tyres. नीचे में I think 385 is the support. But मेजर हायर टाइम फ्रेम में बेरिश मूव है. तो आई थिंक अवॉइड लॉन्ग पोजीशन इन अपोलो टायर्स. अगर नहीं है तो डोंट गेट इनटू इट. Amit ji, we will definitely share the trade in Nifty if we have any as of now, क्योंकि मार्केट अभी एकदम फ्लैटिश ट्रेड कर रहा था इनटू पॉजिटिव. अभी नेगेटिव हो गया राइट. थोड़ा सा हमें और नीचे दिखने मिला 24 पॉइंट. तो 22,300 वापस आ गए. तो द मूव्स आर वेरी क्विक एंड वेरी इराटिक. तो someone who was holding the put option, I think he should exit of the put option. I think 20,300 जिसने भी बाय किया था तो जो स्पॉट लेवल था वापस ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स का रिकवरी है. So the moves are very quick and एक range में है but volatility is very high within that range. So it is very difficult to trade between this range only because नीचे में 20,222 as I mentioned is support and it is holding as of now. And ऊपर में 22,350 and 400 are the resistance. So these एक 120 points के range में but swings intraday है. तो be cautious, be mindful of your stop. अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इन निफ्टी फॉर द इंट्राडे एंड जो एक्सपायरी है बिकॉज प्रीमियम्स डीके भी एक फैक्टर है. क्विक मूव्स में प्रीमियम may get eroded very quickly. So be mindful of your stop losses if you trade in Nifty. So guys, we'll take two more queries for today's morning session, and before I move ahead guys, we have rolled out a poll in the poll section just beside the chat box, right? So please go and share your feedback on it. Also we would really appreciate कि जो भी आप लोग स्टॉक में ज्वाइन कर रहे हो तो whatever the trades and intraday BTST and option calls you guys are initiating, please make sure you are doing it from Rise app.
our super app. We have come up with a lot of new things out there in the application. So please make sure you go and check it out, since it's absolutely free of cost, this or Stockholm for you guys. So we would really appreciate the upload. Should definitely use the best out of the features that we guys are offering you. So yes, we'll come back again with the stock queries. Sure. What is your NCC? So NCC is also looking decent. I'll just check. तो कल अप मूव था, आज ऊपर खुला था लेकिन थोड़ा सा करेक्टिव हुआ है, बट ऑल्दो द हायर टाइम फ्रेम पे द स्टॉक इज इन नेगेटिव ट्रेंड डेफिनेटली, बट नीचे पे अच्छा एक पुल बैक आया था. तो आई थिंक ऊपर में द इमीडिएट रेजिस्टेंस इज 195, नीचे में सपोर्ट इज 180 182. तो एक रेंज में, बट हायर टाइम फ्रेम इज नेगेटिव. तो बी माइंडफुल व्हाटएवर पोजीशन यू टेक इन एनसीसी, बट नीचे में 182 सपोर्ट है, 195 इज द रेजिस्टेंस इमीडिएट. सर आईओसी जो हमने इंट्राडे ट्रेड दिया है उसके कब तक होल्ड करना है? आज इंटरडे इज मैक्सिमम 315 तक. So मयूर जी, इट विल बी रियली बेटर अगर आप उसको इंट्राडे पोजीशन पे ही बाय सेल करें, नॉट इन द कैश, राइट? क्योंकि इंट्राडे ट्रेड्स आर प्योरली इंट्राडे कॉज लेवल्स भी, और हमने रिकमेंडेशन भी उसी टाइम पीरियड के लिए दिया रहता है. तो कैरिंग इंट्राडे पोजीशन एज अ पोजिशनल ट्रेड इज आल्सो नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज हमारा व्यू इज शॉर्ट. तो मतलब शॉर्ट एज इन कम टाइम का रहता है, तो अकॉर्डिंगली वी गिव सम. कोई मोमेंटम ट्रेड रहता है तो मोमेंटम इंट्राडे ही प्ले आउट हो जाता है. एंड ऐसे ही हो रहा है फ्रॉम लास्ट काफी सेशन से, व्हेन फॉलो अप कोई भी स्टॉक में नहीं आ रहा है. तो जो आज इंट्राडे पॉजिटिव है वो दूसरे दिन नेगेटिव खुल रहा है, एंड लाइकवाइज नेगेटिव है पॉजिटिव खुल रहा है. थोड़ा इरेटिक है, बट एज ऑफ नाउ जो इंट्राडे पोजीशन है, प्लीज इंट्राडे प्योरली इंट्राडे, नॉट डोंट कैरी इट ओवरनाइट. So the last query for today will be ITC for today. I mean, for the intraday point of view. For intraday, okay. So ITC एक रेंज में, बट आई क्विकली. So ITC नीचे में अगर किसी को लॉन्ग करना है तो 398 और 395 will be should be your stop अगर लॉन्ग करना है तो. एंड ऊपर में we can see some move towards 408 and 410, बट ऊपर से करेक्ट हुआ है तो be mindful. But अगर long position किसी को create करें तो 395 should be your stop and look for 410 on the high side. So great, I guess that's it guys from our end in terms of to today's morning session. हमने काफी सारे stocks queries को address किए, right? उसके अलावा हमने दो intraday trade भी share किया है. One was on IOC and another intraday trade was on Hind Copper, right? So it's been it as well in the chat box. Please make sure you initiate the trade with stop loss or whatever the figures we have suggested to you, right? And हमने निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड आल्सो द बैंक निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी शेयर कर दिया है. सो यस, दैट्स इट गाइस फ्रॉम आवर एंड. जिनका भी हमने क्वेरी ले नहीं पाए, राइट, सिंस कंसीडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट फैक्टर, प्लीज मेक श्योर यू पोस्ट इट ऑन स्टॉकहोम. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी आउट देयर. सो यस, on that note, we'll just end the session, and also we have our Nifty expiry today. So also don't forget to join our Nifty expiry at 2:30 p.m. right? And yes, we also have the Ruchitsa session at 11:30 a.m. in the today. So yes, also join that. So yes, that's it guys from our end. Thank you so much for joining. Thank you so much. Thank you Avinash, and everyone have a good day.